Dear students, today we are going to discuss about the topic size reduction. That is, the topic comes under your subject Pharmaceutical Engineering Unit 1. Now, first of all, what are the objectives or learning outcomes of size reduction? Upon completion of this topic, that is size reduction, you will be able to know about its definition, its objective, mechanism which explains the theories of size reduction. There are certain factors which affect the size reduction. There is equipment used for size reduction. The equipment involving the principle, construction, working, use, merits, demerits of that size reduction equipment are studied in detail in this topic size reduction. Now, what is size reduction? Size reduction is the operation carried out for reducing the size of bigger particles into smaller ones of a desired size and shape with the help of external forces. Or it may be defined as a process of reducing large solid unit masses into small unit masses, that is of coarse particle or fine particles. Size reduction may also refer as combination and grinding. These are the other terms which are used for size reduction. What are the objectives of size reduction? What and when it will helpful? That is its objective. Size reduction increases the surface area because in most reactions involving solid particles, the rate of reaction is directly proportional to the area of contact with the second phase. Hence, size reduction जो मेजरली सॉलिड पार्टिकल्स का जो आप ब्रेक डाउन करते हो, तो जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स की वजह से उसकी जो बेटर प्रॉपर्टीज होती है, सर्टेन प्रॉपर्टीज दे आर यूजफुल फॉर टैबलेट पंचिंग, टैबलेट टैबलेट मिक्सिंग के जो भी प्रोसेस होगी, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की जो वेरियस प्रोसेस होंगी, वहाँ पे वो बेनिफिट होगा. देन it breaks a material into very small particles in order to separate the value among the two constituents. It achieves intermediate mixing to dispose solid waste easily, to improve the handling characteristic, and to mix solid particles more intermediately. For that, size reduction processes are useful. Now, what are the advantages of size reduction? It improves the content uniformity. It also improves uniform flow. These both properties are involved while processing of tablet or capsule. It effectively dry while due to the size reduction, uniform size are formed, and that also benefit while drying process. Effective extraction of drug. It increases surface area or viscosity. To uniform mixing and drying, size reduction is useful. It also improves physical stability. It improves dissolution rate and also improves the rate of absorption. Now there are certain limitations or disadvantage of process, that is size reduction, that is drug degradation, contamination, and poor mixing. While you mix two mixtures of that may be a solid drug or a liquid material or maybe solid-solid mixing, so depending on the particle size or the nature of that substance, the degradation may happen. Contamination because the nature of a drug substance or other ingredient, and the equipment which is used for size reduction may get due to that contamination may happen. Certain properties of drugs, that is hygroscopic nature, or sometimes certain substance may absorb the moisture. Due to that, poor mixing may lead to and your uniform mixing may not be happen, and hence
These are the certain disadvantages of size reduction. Now, there are certain mechanisms which explains the size reduction process. The certain mechanisms are impact, compression, attrition, cutting. Now, the impact involves particle size reduced by a single rigid force, that is, hammer. With the help of a hammer, you will break down the certain solid particles. That force is referred as impact force. Other force is compression. In this mode, material is crushed between rollers by the application of pressure. Now here, to remember this compression mechanism, you have to remember the puri making machine. If you ever observe, while you put that atta between the puri making machine and you apply the forces, it gets flattened. That force is nothing but the compression force. Now is iteration, arising from particles scraping against one another or against a rigid surface by rubbing action. Here, to remember iteration mechanism, you have to remember the example of silabata. While preparing any kind of a chutney, you will ever observe that you mix these certain particles and you apply the forces on a solid material, that is silabata, और आप जो फोर्स अप्लाइड करोगे वो जो चटनी बनाने की प्रोसेस होगी वहाँ पे, और जो फोर्सेस अप्लाइड होगा दैट इज नथिंग बट iteration force. While in case of a cutting, the material is cut by means of sharp blade that you all aware, that is chopping of any solid material, or that may be a vegetable cutting or fruit cutting. That mechanism refers as cutting. Now here in example you are saying certain forces. Compression force केस में क्या होगा, आपकी एक सॉलिड की एक सरफेस पे वो सिर्फ एक ही सरफेस पे वो फोर्स अप्लाई होगा. फ्रिक्शनल फोर्सेस के केस में कैसा होगा कि आप जो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा फ्रिक्शनल फोर्सेस के केस में. इम्पैक्ट के केस में वेरियस वेव ऑफ फोर्स अप्लाइड होगा, वो दोनों एक ही साइड पे भी हो सकता है, इट मे बी ऑन टू वे साइड्स, और केस ऑफ कोलिजन फोर्सेस वेरियस जगह से वो फोर्सेस अप्लाइड होगा और ब्रेक डाउन होगा. शियर फोर्सेस के केस में क्या होगा कि आपका जो मटेरियल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड होगा, मतलब ऊपर की साइड से भी होगा और नीचे के साइड से भी सेम टाइम पे फोर्स अप्लाइड होगा और ब्रेक डाउन होगा. सो दिस आर द वेरियस mechanism which explain about size reduction. Now, this mechanism are also referred by certain theories. This mechanism also studied by various theories that are energy input and utilization are important factor to estimate efficiency of a mill for a given material. Means आप जो भी एनर्जी अप्लाई करोगे ब्रेक डाउन करने के लिए, जो भी मटेरियल को आपको ब्रेक डाउन करना होगा, तो वो एनर्जी एंड दैट ब्रेक डाउन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगी वेरियस थ्योरी. दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल is inversely proportional to the size raised to the some power. This can be expressed mathematically as dE by dt is equal to minus c upon d raised to n, where E is amount of energy required to produce a chain, that is in a unit K in kilowatt into R. D is the size of unit mass, and C and N will be the constant. Means थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, जो पार्टिकल की साइज रिड्यूस होगी, वो एनर्जी और जो साइज रिड्यूस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है, जो पावर अप्लाई होगा, एनर्जी जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितनी आप एनर्जी अप्लाई करोगे उसके सामने जो ब्रेक डाउन होगा पार्टिकल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. दिस रिफर एज इक्वेशन 1. Here there are certain theories which can be explained while you replace the number of n. जब आप
डी रेस टू एन के बदले जो भी नंबर रिप्लेस करोगे, एन कोई भी हो सकता है, 1, 1.2, 1, 2, 3, एनीथिंग। जब भी आप एन को रिप्लेस करोगे वहां पे सर्टेन थ्योरीज बनेगी। दैट थ्योरीज आर now when you put n is equal to 1, that equation may be referred as A is equal to C integration of di divided by dn, where di is the size of the field, that is in micron size, dn is size of the product, and this di by dn ratio is referred as reduction ratio. Now this equation is now referred as equation 2. The equation 2 satisfies various theories proposed for size reduction. How? When you put that n is equal to 1, it becomes Higgs theory. Here, you replace n with 1.5, it becomes bond theory. If n is equal to 2, that equation proposes the Rettinger's theory. Now, we'll see the detail about these theories. First is Higgs theory. Remember, in Higgs theory, n will be 1. Higgs theory states that energy required for deforming or fracturing of a set of particles of equivalent shape is proportional to the ratio size change. Means, जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे साइज चेंज करने के लिए, वो पार्टिकल साइज का जो शेप चेंज होगा, that is proportional to that of energy. It may be explained with the equation that is E is equal to kk integration of di by dn, where kk is Higgs constant, that is energy per unit area. The unit is kilowatt into r. Di is initial diameter of particle, that is in micron size. dn is new diameter of particle in micron size. Means जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे, जो पार्टिकल का पहले का इनिशियल शेप होगा वो, और उसका डायमीटर फोर्स अप्लाई करने के बाद का चेंज होगा वो, दैट एक्सप्लेन बाय द हिग्स थ्योरी. दैट इज नथिंग बट जब भी आप कोई भी एनर्जी अप्लाई करोगे किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करने के लिए, उस टाइम पे जो भी साइज चेंज होगा इनिशियल एंड आफ्टर द एनर्जी अप्लाइड, that is explained by Higgs theory. Now about Bond's theory. According to Bond theory, the energy used in crack propagation is proportional to the new crack length produced. मतलब आप जब भी कोई फोर्स अप्लाई करते हो और जो ब्रेकडाउन होगा पहला सेपरेट पार्टिकल पार्ट सेपरेट होगा एक यूनिट में से, दैट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू दैट फोर्स. जब भी आप फॉर एग्जांपल आप हैमर से किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो, तो जो पहला ब्रेकडाउन होगा मतलब एक में से दो पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे, जो लेंथ प्रोड्यूस होगी, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय Bond theory, or you can say that is referred as Bond theory. It states that energy required for deforming a set of particles of equivalent shape is proportional to the change in particle dimension. मतलब जब भी आप एनर्जी अप्लाई करोगे और जो पार्टिकल का डिफॉर्मिंग होगा, that shape is proportional to change of particle dimension. This can be again explained with the equation E is equal to 2 kbu under bracket 1 is to 1 upon d under root of dn divided by 1 upon under root of di. Remember, di is always referred as the initial diameter of the particles. फोर्स अप्लाई करने से पहले का जो डायमेंशन होगा और डायमीटर होगा वो, और dn will be the new diameter of particle. Again, you have to remember in Bond theory n will be of 1.5, and kb is bonds constant, bonds work index or energy per unit mass, that is kilowatt into r under root of micron, that is of size. जो भी size change रहेगा वो, and a always referred as your energy. Now, in case of Rettinger's theory. According to this theory, energy is required for size reduction of a unit mass is directly proportional to new size surface area produced. Means
जब भी आप एनर्जी अप्लाई करोगे और जो नया ब्रेकडाउन होगी, जो सरफेस एरिया क्रिएट होगा, वो दोनों प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी से। जितना एनर्जी अप्लाई करोगे उसके सामने उतना ही सरफेस एरिया क्रिएट होगा। अगेन इट कैन बी एक्सप्लेन विद इक्वेशन E is equal to KR under bracket Sn minus Si, where E is amount of energy, that is kilowatt, into R. Si is initial surface area, Sn is new specific surface area. You have to remember N will be your 2 in Rittinger's theory. N will be 2. Kr is Rittinger's constant energy per unit area, that is kilowatt into hour per micron. Now here यहाँ पे क्या होगा, Rittinger's की थ्योरी में आपने जब फोर्स अप्लाइड किया तब जो ब्रेकडाउन होगा, जो सरफेस एरिया क्रिएट होगा, दैट इज Rittinger's theory. इन केस ऑफ बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा, जो लेंथ प्रोड्यूस होगी, जो ब्रेकडाउन होगी, जो उसका लेंथ प्रोड्यूस होगा, दैट इज बॉन्ड थ्योरी. एंड इन केस ऑफ किक्स थ्योरी यहाँ पे क्या होगा, जो साइज चेंज होगी. 3 मैकेनिज्म है, किक्स, बॉन्ड एंड Rittinger's. बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप फोर्स अप्लाइड करोगे उस केस में, किक के केस में क्या होगा, आपका फ्रैक्चर होगा, वो फ्रैक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. बॉन्ड के केस में क्या होगा, जब आप फोर्स अप्लाइड करोगे तो जो लेंथ प्रोड्यूस होगी, जो ब्रेकडाउन होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एनर्जी. एंड Rittinger's के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल सेपरेट हुए हैं उसका जो सरफेस एरिया क्रिएट होगा वो एनर्जी को प्रोपोर्शनल होगा. सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ अ पार्टिकल, सेकेंडरी केस में होगा आपका पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, जो ब्रेकडाउन होगी, जो सरफेस एरिया क्रिएट होगा, दैट इज Rittinger's theory. एंड इन केस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे लेंथ, क्रैक लेंथ प्रोड्यूस होगी. ठीक है. सो दिस आर 3 theories which explain about the mechanism of size reduction. Now there are various factors which affect size reduction, like material, depending on the raw material that may be of hard material, fibrous material, friable material, elastic material, solvated or hygroscopic materials, thermolabile or low melting point substance, flammable mixings, particle size and moisture content. These are the various factors which affects the process of size reduction. Now in that case हार्ड मटेरियल होगा तो उस केस में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं. हार्ड मटेरियल के केस में हम हेमोमिल और फ्लूइड एनर्जी मिल यूज कर सकते हैं. हार्ड मटेरियल सच एज जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा. फाइब्रस मटेरियल जो ऐसा जिसका कम एनर्जी होगी, एनर्जी वहाँ पे कम होगी और इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं. उस केस में वैसे मटेरियल के केस में हमें कटिंग भी यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ फ्राइबल मटेरियल we can use hammer mill or fluid energy mill. Elastic materials के केस में अगेन हम hammer mill, colloidal mill और fluid energy mill यूज कर सकते हैं. Solvated or hygroscopic materials, in that case we can use ball material, thermolabile and low melting point substance, flammable mixing, particle size and moisture content. Certain cases में हम again fluid energy mill most widely used होती है. Now this factors indicates what, that material, जो भी आप मटेरियल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं उनका नेचर क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट while using that size reduction equipment. वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, सपोज मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक है, सर्टेन टाइम हम मिक्सिंग कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट ऐसा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो उस केस में हम जो फोर्सेस अप्लाइड करेंगे तो मे बी चांसेस है कि वो स्टिक हो सकता है आपके अंदर इक्विपमेंट के साथ, और इट मे बी स्टिक विद अदर मटेरियल व्हिच आर यूज्ड, उनके साथ भी वो स्टिक हो सकता है और आपका प्रोडक्ट डिग्रेडेड हो सकता है. पार्टिकल्स के साइज में कैसा होगा, अगेन पार्टिकल साइज अगर प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होगी तो अगेन आगे की जो आपकी फर्दर प्रोसेसेस रहेगी वो प्रोसेसेस में वो एरर प्रोड्यूस करेगा. सी ऑल प्रोसेसेस आर मेजरली इम्पैक्ट ऑन योर टेम्पलेट पंचिंग और अदर प्रोसेसेस. While you form, आप जब आप फिनिश फॉर्मुलेशंस बनाओगे उस केस में आपके ये सारे फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करेंगे. मतलब कि आपका इनिशियल पॉइंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका फिनिश प्रोडक्ट
properly नहीं बनेगा. Now, now in next lecture we will discuss about the various forces and that equipment which are used for size reduction.